So were you three, all of you were there at the last lecture? Shubham, Yes, sir. okay, Yes, sir. okay. So we'll go through that stuff, okay, again, just a revision sort of thing, and we'll today we're gonna study about LCD interfacing, okay. 16 is to do wala LCD module, and we'll see how to program that, okay, because you must have seen such LCD modules, okay, deployed, across various range of devices, but today you'll know how complex it is to program such LCDs and how it actually displays. So we'll get started. Okay, before that, one more thing. So, what do you see on my screen right now? Sir, the embedded systems syllabus. Okay, cool. I was just checking how far are we. So, see, this hardware and microcontroller and microprocessor unit. So we are here, okay, unit 2 only. So I'm targeting to finish it in another couple of lectures, okay, and then rest, because this is the complex part we are at right now. The rest of the things will be pretty much theoretical. Wherever needed, I'll show you hardware interfacing along with codes and stuff, but there are a lot of codes that I have planned for this unit, and I will complete those and then only will move on. Even if this unit takes time, that's fine with me. We can cut down on the time for the rest of the units. So yeah, this unit, it will take time, but it is important also. We are already halfway through almost. Then so popular RTOS examples, I will not cover it in this unit because we have that in the upcoming units also. Oh, sorry, we are here. Okay, ARM Cortex, we are case studies, and yeah, and UART, SPI, and I2C. These things, these things I want to cover, and yeah. So suppose that only will move ahead. Okay, and this is RTOS unit. I thought this unit has the RTOS examples, and that's why I was telling you that I will cover it in the next unit. But no, this is already the next unit. So yeah. Anyways, I'll share my other screen. I need whiteboard. Do you see whiteboard now? No. Yes, sir. Now it is visible. Still not visible? Yeah, visible. It must be loading still. Yeah, it's there. So this is somewhere we stopped the last time. Okay. Okay, what I'll do is I'll remove the theory things. I'll keep anyways stuff that we need to revise.
So we started with what? The timers and the counters, the last lecture. And okay, let me remove this all. I don't want it. So I'll just quickly revise it for you once again so that we are on the same page and we are not missing out on anything. So we get started with the timers. Because I'm traveling today, so uh, wait for this. Okay, so timers basically microcontroller. Our microcontroller is a 16-bit timer also. Okay, and 16-bit it has total two counters. Okay, T0 and T1. Okay, but this T0 T1 gets divided into further like 2 to 8-bit के section. ठीक है, so T0 and T1. So how it looks like is this somehow. This T0 के दो like 8 bits and again T1 के दो sections आएंगे 8 bits के, and how they have named it is this T0, right? So TH0 and TL0, TH1 and TL1. These have them named it. So this is the basic. Now, what is like what exactly is timer then in microcontroller? What it's there to do? Like what is it doing exactly? So when I say it's timer, it means that it's counting the pulses. Okay, counting the pulses. Okay, internal pulses, whatever it is, and to like what count, how much of the count will be there depends on the number of bits which are there, right? So uh, in binary, if we do 2 raised to 16, it comes somewhere around 65,535. So this is the number that I can count. Okay, the maximum number that I can count using the timers. Okay, so suppose, okay, I'm not telling you the exact number, but suppose this number, if I count this number totally, ये suppose करो कि 10 मिलीसेकंड 50 का होता है कि 50 मिलीसेकंड का डिले जनरेट कर रहे हैं सपोज ये नंबर्स. ओके, सो तुम्हें 50 में मतलब if you load the maximum number, it is generating maximum of 50 milliseconds delay, okay, in the actions in between. Suppose you want it to be less or more, how will you achieve that? Okay, any idea? We covered it last time, but I mean one case we covered the last lecture, that इससे कम count हो तो I mean how do we really count it, how do we load the value? So that is one thing. And second scenario is कि हमें 50 मिलीसेकंड या जो भी मैक्सिमम काउंट है उससे हमें ज्यादा डिले जनरेट करना है, तो how can we do that? any idea on the second case? Have you given this a thought कि इसमें तो इतना ही नंबर होता है तो इतना ही काउंट होगा क्या, इसके बाद अगर हमें फिर से करना है तो क्या करें? Didn't you guys think of it? No, sir. Okay, so suppose तुम्हें 1 सेकंड करना है, ठीक है, and maximum this can do is 50 milliseconds. Okay, I'm assuming it to be 50. Okay, I'll calculate accurately and tell you how much it comes out to be. Okay, I'm assuming it to be 50 milliseconds. If I want to generate 1 second का delay,
देन क्या है, यही चीज मैं 2 बार चलाऊंगा, बराबर हो गया 1 सेकेंड का डिले। जो मैं एक बार कर रहा था उसको 2 बार करूंगा, 1 सेकेंड हो गया। सो दिस इज वन मेथड. Another method is, tmod register, and there are modes, right? M0, M1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1, ये 4 modes है. So ये जो वैल्यूज है, तुम लोड करते हो मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3. सो इसमें ऐसे मोड्स है: 8 बिट ऑटो रिलोड, ओके, 13 बिट टाइमर, 13 बिट काउंटर. सो ऐसे जो मोड्स है, तो 8 बिट ऑटो रिलोड मतलब ऐसे होगा कि यहाँ के तुम, अगर तुमने यहाँ के 8 बिट में कुछ तो काउंट लोड किया है, अगर ये काउंट फुल हो जाता है तो इधर एक नंबर बढ़ेगा, एक काउंट बढ़ेगा, ठीक है. Then again it will start counting from zero, like TL0 के again it will start counting from zero, okay, 0 to FFH, okay. FFH होने के बाद यहाँ पे होएगा 2, okay, 1, 0. Then फिर से इधर FFH हो गया, फिर से इधर कितना हुआ, मतलब are you understanding, like it will 8 bit auto reload is like इधर 8 बिट हो गए, फिर इधर 1 बिट बढ़ेगा, like that it will increment this on, the total increment of this. एक बार ये ओवरफ्लो हो गया तो इधर एक काउंट बढ़ेगा, दूसरी बार दो, मतलब ओवरफ्लोज काउंट करेगा इधर, ठीक है. सो इधर ये भी अनदर मेथड है, हमें इससे भी ज्यादा काउंट जनरेट करना है तो, बट दिस इज मोस्टली इट इज सफिशिएंट for the regular application, okay. Using 16-bit timer as a mode, and the maximum delay it offers, it suffices our needs. So we usually don't go beyond that. We will try those codes as well going further, but we actually don't need those number of delays. So ये एक बात हो गई, तो हम भटक गए actually topics. So then we studied a little about, not a little, actually everything about tmod and tcon, and I had that pasted here somewhere. Anyways, I'll get the new. No, anyways. Hmm. This tmod में we have first 4 bits which control timer 1 की operation, next 4 of course time 0 के operation. So yeah, this gate thing at both the places. Then C/T bar M1 and M0. So C/T bar is definitely counter or timer, okay, counter or timer. If you want it as a counter, set it as 1, timer 0, या उल्टा है, क्या है इसका, 0 1 1 0, क्या है, anyone? Sir, 1 for counter and 0 for timer. You sure about it? Yes, sir. Okay, fine. If you are saying, we agreeing to you, okay. Counter and timer, right? Or timer and counter, how is it? Okay, gate का क्या purpose होता है? Gate, what did I tell you the last time? Like if I'm setting gate as 1, what does that mean? Sir, it allows the external interrupts. Yeah, on the external interrupt आने के बाद ये timer जो है counting start करेगा, okay? मतलब जो int 0 and int 1 पिंस है हमारी, हमारा कंट्रोलर है, इधर 2 पिंस आती है, int 0 and int 1, okay. So अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ टाइमर 1 के लिए, तो टाइमर 1 स्टार्ट कब होगा, जब
इधर इंटरप्ट की पल्स वो डिटेक्ट होगी ना तभी स्टार्ट करेगा, ठीक है। और ये हम टीकॉन में डिसाइड करेंगे कि पल्स के कौन से लेवल पे ये इंटरप्ट हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। There is edge trigger and then there is a level trigger. Two things are there, okay. This is negative edge triggering, this is negative level triggering, this is positive edge triggering, okay। मतलब जब सिग्नल मेरा ऊपर से नीचे जा रहा है, इट इज नेगेटिव एज नहीं है, तो यहाँ पे ट्रिगर होगा। यहाँ से यहाँ जा रहा है, इट इज अ लेवल ट्रिगर, नेगेटिव लेवल, एंड दिस इज it's going upwards like this, it's a positive edge trigger, so it's like that. And we configure these mode in tcon register, if you remember, okay। Anyways, let's continue talking about tmod for time being। and tmod में गेट का पर्पस है कि हम इंटरप्ट पिन को, एक्सटर्नल पिन से हम इनपुट लेंगे, ओके। It's not working properly। इनपुट लेंगे, ओके, टू स्टार्ट द टाइम, ओके। एंड दिस विल बी 1, ओके। अगर ये 1 है तो वो होगा, नहीं तो 0 है तो नॉर्मली। ये तो हमें पता है, काउंटर टाइमर मोड सभी 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। इसके अलग अलग यूजेस है। वी मोस्टली यूज मोड 1 which is 16 bit timer, ओके, और काउंटर डिपेंडिंग ऑन द CNT स्लैश। सो आगे यहाँ तक याद आ गया सब, या मतलब ऐसे कुछ तो पढ़ा था, राइट? Yes, sir. Okay, good. So next we will talk about tcon a bit, okay। Tcon may we have like TF0, TF1, which is overflow basically, then start the timer, TR1 and TR0, then IE1, which is when interrupt is received at int 0 and int 1, okay, it sets this bit to 1, and like it's okay। Anyways, let's just quickly go through that also. Delete. So oh, where is it? Okay, we have special guest appearance, tcon, okay। Tcon we have TF1, TF0. What is TF? TF is overflow flag basically. Wait, I need to change this damn thing. I don't have it with me right now, so I gotta overflow flag, okay। TF 0 or 1, whatever, okay, overflow flag. When are, suppose I'm working with timer 0, 16 bit टाइमर मोड में, ओके, जिसके TL0 एंड TH0 दोनों भी काउंट करके ओवरफ्लो हो गए, भर गए, उसके बाद ये बिट सेट होगा, ठीक है। ये बिट सेट होगा तो तब भी हमें पता चलेगा कि टाइमर ओवरफ्लो हुआ है। इट मींस दैट द डिले काउंट इज कंप्लीट, ओके। वी कीप पोलिंग फॉर दिस, ओके। हैव यू रिटन समथिंग लाइक दिस इन कोड? delay or whatever, here we say like JNB and TF0, something like that, means we keep calling for TF0 until it is overflowing, and then we are executing another steps in code, okay। So this is basically polling for TF, so that we know the timer has overflown, and we got to proceed with our code. Then we studied TR0, TR. So TR is something that starts the counting. Okay, TR जब तुम सेट करोगे मैन्युअली तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Then IE1 and IE0, IT1 and IT0. So IE is interrupt वाला पिन, ठीक है। IE is suppose
INT 0 and INT 1 पे इंटरप्ट आते हैं, राइट? INT पिन है जो एक्सटर्नल पिन्स, एंड INT 1, ठीक है, दीज आर पिन्स, ओके। यहाँ पे कुछ तो इंटरप्ट आया है, ठीक है, INT 0 पे। तो क्या होगा, ये IE 0 जो है, IE 0 ये सेट हो जाएगा, ओके, ये सेट हो जाएगा और ये सेट ही रहेगा, ओके, जब तक इसका ISR एग्जीक्यूट नहीं होता, इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट नहीं होता, तब तक ये सेट ही रहेगा। ऑन कंप्लीटली unsuccessful execution of this ISR, this bit is again gonna go back to its initial reset value, which is 0, okay। ये हो गया IE1 and IE 0 का। What is IT1 and IT 0? So IT is the triggering thing that I told you. So we decide here we want our interrupt to be level triggered or edge triggered, okay? Edge trigger means this is edge, level trigger is this is level, okay, in specific level. So these are that pins which decides on what portion of the signal your timer should trigger, okay? So is TCON register clear to you guys, or you guys have any question? Ask me right now, because I don't think after this we will get time to repeat it. Excuse me. So it's clear, right? इसके बाद क्या देखा था हमने, या इसके बाद calculations देखे थे, right? So to calculate the values of let me present my slide only. My video is for some reason too much distorted. I don't know. Still the same anyways. So to share entire screen now. So I hope my screen is visible to you guys. And now something that is in front of you is THX and TLX calculation, like TH0 or 1, TL0 or 1 के calculations है ये, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था, we have to generate the delay of 50 milliseconds, okay? We have to generate delay of 50 milliseconds, okay? So, and we've been given clock frequency to assume, okay, we've been given clock frequency to assume, which was 11.0592 megahertz, and we have to count TH0 and TL0 ka count, okay, for this particular frequency for 50 millisecond ka delay generation. So how did we do that? So first of all, जो frequency हमें दी जाती है उसको 12 से divide करते हैं हम, because why? Because for every 12 oscillator cycle there is one machine cycle, okay? जब 12 oscillator cycles होती है तब एक machine cycle बनती है, and we have to calculate machine cycle frequency. How will we do that? We'll divide it by 12. So that gets divided by 12. It comes out to be 91.6 kilohertz. Okay, then uh,
देन इसका वन बाय फ्रीक्वेंसी किया तो टाइम आता है, तो सिर्फ वी नीड दिस टाइम इन फ्यूचर, सो वी कैलकुलेटेड एंड kept it over here. Okay, then the actual formula to calculate the total counts when we've been provided with this particular delay, okay, number directly, it's like as it's provided, so we can put this formula up directly. The total count is equal to the frequency, or the I mean frequency also can be given. They have given it in time format. If it was frequency, then you would divide it by 1 and then you'll get the time. Okay, it's in time already now. So it's 50 milliseconds. So the time given into machine cycle frequency gives you the counts. Okay. Now, in this case, we got 46080 counts. Okay. So, so how much, one thing I mentioned is that a timer is what? Up counter, is it? It's up counter. Okay. So can anyone just summarize what is mean by up counter? And if you have idea why we deducted this from this number? Sir, so the up counter only count upwards. So means to get that answer. So means we have to deduct the number from the 65,536, because uh, uh, what we can say, to get that number of counts from the up counter, we have to deduct it from 65,536. करेक्ट, मतलब ऐसे इमेजिन करो, मैं एक सिनारियो देता हूँ. तुम्हारी नोटबुक है, ठीक है. Then 65,536 is the last page number, okay, of your notebook. तो हमने क्या किया, हमारे पास टोटल काउंट है, व्हाट वी हैव टू काउंट इज 46,080. तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट पेज पर जाएंगे हम, ठीक है. लास्ट पेज से हम 46,080 पेजेस इस साइड को, अपने राइट साइड को डालेंगे, ठीक है. एंड फ्रॉम देयर विल स्टार्ट काउंटिंग अगेन लाइक 46,080. Okay, this is how it works, if you got my context. So this being, an up counter, it only counts upwards. Okay, so we need to know from where it has to start in order to achieve this number, and so that timer overflows, because our condition is timer should overflow ना. इसलिए इतना सब कर रहे हैं हम कि 65,536 is the total count that can be loaded. Okay, from that we are deducting this, so that there is a number that we are getting, and we are telling our controller कि 19,456 के आगे काउंट करना स्टार्ट कर, वन बाय वन, तब हमें मिलेगा ये नंबर. ओके, इसमें कितने मिलाने पर हमें 65,000 मिलेंगे, तो 46,000 जीरो 080, ये ऐड करने के बाद विल गेट 65,536. And that's the thing, if you add it up you'll get this number. So because हमने काउंटिंग स्टार्ट की 19,000 से, हम पहुंचेंगे 65,000 तक, बीच में काउंट करेंगे हम 46,000. So that's what we want. So we got this number, we put it up online, we converted it to hex value, it came out to be 4b and 00. Okay, and then we loaded it into TL0 and TH0. Okay, so TH0 higher bits will always go in higher TH0. Okay, lower bits will always go in TL0. ठीक है, तो ये लोड किया हमने. इसके बाद we took an example of a code. We'll just quickly go through that code. Okay, okay, इधर नहीं है code, let me take it from somewhere. I just don't want you guys to miss this part, or where is, okay, square wave delay. Very small code, very small code, very
So just a second, I need to remove the mess from this code so that it's more readable. So I'm just pasting a sample code here, okay? And then I'll share my screen again. तुम लोगों को कोड्स वगैरह चाहिए तो बोल दो मुझे, ठीक है? मैं वैसे भेजूंगा, लेकिन I send usually, at the end when the exams are closed, right? So if you want it in advance, do let me know. I can get in touch with you and share that content with you. So is my window visible, guys, now? Sorry. Yes, sir. Thank you. So पोर्ट 1 पे हमें डिले जनरेट करना है, ठीक है? Like this, okay? Then let's walk through this code and see how it is happening. You must be able to relate with it now, and I'm purposely doing it. Like I'm purposely, uh, you know, doing it over and over again so that you are like more familiar with all the stuff that is going around, because this is just difficult to just capture it and go with it. So anyways, so port 0 first we have reset the port 0 to certain value, which is 0. Okay, this is our 0 level and this is our 1 level. Okay, I'm at 0 now. This is my what? Port 1. Okay. So मैं क्या कर रहा हूँ, पोर्ट 1 को 0 कर रहा हूँ, देन डीले कॉल कर रहा हूँ. Now delay, how they have written delay, just have a look. Tmod 01h. Okay, Tmod 01 मतलब कैसे? 0 0 0 0 0 0 0 1. Okay, comes out to be 01h. Okay, 01h में है, मतलब Tmod किस मोड में सेट किया है? Shit, यार, I need to share my entire screen. Yes. So Tmod has been put into which mode? So now let's see that. Okay, can you guess any guesses? Tmod में we loaded 01, right? So ये first चारों bits तो 0 हो गई. Okay, 0, and here 0 0 0 0 1. So get it 0, ठीक है? काउंटर एंड टाइमर का 0 रखा है, मतलब वी आर यूजिंग इट एज टाइमर. देन 0 1 0 0 0 1, मतलब दिस इज मोड 1. ओके, मोड 1. तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यूज मोड 1. ओके, यूज द टाइमर एज मोड 1. ओके, ऐसे नहीं आएगा कि टी मोड में 0 1 मूव करो, ऐसे नहीं आएगा. use mode 1 of our timer, ऐसे आएगा question. Then you have to understand and use that timer as a timer, ऐसे कुछ तो लिख के आएगा. So you have to understand that 0 1 mode 1 is 16-bit counter, 16-bit timer or counter. Okay, so ये हो गया T mode. इसके बाद हमने एक एक बिट सेट किए, जो जो हमारा जो भी काउंट आएगा हम इधर लिख देंगे, ठीक है? एंड उसके बाद हम TR0 सेट कर रहे हैं. TR0 is a
bit. Okay, TR0 is it's 1 bit in what? Tcon. Okay, and why I have mentioned TR0 like this directly? Because Tcon is the bit addressable register. Okay, bit addressable है ये. Hmm. इसलिए I could just set TR0. Set TR0 set किया मतलब it will start the counter. Okay, it will start counting upwards from the whatever is the value. E0 V1 I suppose. Sorry, it will be V1 E0 something like that. So यहाँ से upwards counting start होगी. ठीक है, until FFFFH. FFF होने तक counting start हुई. How are we checking that FFFF? When it will overflow, ये TF0 bit जो है वो set हो जाएगा. ठीक है, TF0 bit है set हो जाएगा. Until this TF0 bit is not setting, stay here only. Okay, jump here only. Okay, once it sets, then clear TR0, clear TF0. Simple code. Okay, TR0 मतलब ये start किया था हमने, वो TF0 इधर set हुआ था, वो भी clear किया, and then the return. अभी delay call कहाँ से हुआ था? हमें first delay call पर ही थे, हम इधर ही थे. रिटर्न गया, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की. अभी पहले हम 0 पे थे, देन डीले एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाट इज सेइंग, मूव पोर्ट 1 0, लाइक #0 FFH. मतलब ये ऐसे हो गई स्टेट. अभी वन वन लेवल पे आ गई. ठीक है, वन लेवल पे आ गई है. ठीक है, डीले एग्जीक्यूट नहीं है. इसके बाद कॉल डीले, फिर से ये वैल्यूज लोड होगी जैसे डीले कॉल होगा. और इतने पीरियड के लिए, ये डीले वाला पीरियड के लिए मेरा पोर्ट हाई स्टेट में ही रहेगा. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद फिर से हम ओवरफ्लो हो गए, डीले खत्म हो गए, सेट क्लियर किया हमने, TR0 क्लियर किया हमने, TF0. उसके बाद गए रिटर्न. रिटर्न इधर से कॉल आया था मुझे ये सेकंड वाले डीले का, यहाँ से. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? एस जंप अगेन. ओके, अगेन क्या है? इधर. अगेन में जाने के बाद फिर से क्या मिला मुझे कि पोर्ट 1 पे 0 भेज दो. फिर आ गया मैं पोर्ट 1 पे, 0 हो गया. ठीक है, फिर होता है कॉल डीले, फिर डीले एग्जीक्यूट हो गया. ओके, फिर ये बोल रहा है कि पोर्ट 1 पे 1 डालो. ओके, फिर से कॉल होगा डीले. एंड दिस इज हाउ द स्क्वायर वेव गेट्स जनरेटेड. एंड ईच ऑफ दिस इज, आई मीन द वैल्यू वी कैलकुलेटेड, वो जो पीरियड है वो ये आएगा. ठीक है, ये 50 मिली सेकेंड का होगा. ये भी 50 मिली सेकेंड का होगा. ऑन ऑफ टाइमिंग्स. ओके, आ गई समझ में? सॉरी. Okay, so now let me know if you have doubts with this code or anything relating to delay generation. Okay, there are applications to it. We'll come to that. This is basic for that. Okay, so this is clear, guys. Is this clear? Yes, sir. Thank you. So आज okay, I will start with this LCD का programming. Okay, we'll take 5 minutes break. Okay, I'll be back in 5 minutes. 5 मिनट में मैं आ जाऊंगा, इधर ही हूँ मैं.
Hey guys, you there? Are you there, guys? Yes, sir. Okay. So we'll start with 16 is to 2 LCD module. Okay. Okay. Is my screen visible? Sir, not yet. Is it visible now? Yes, yes, sir. Okay. So we'll start with 16 is to 2 LCD. Okay. 16 by 2 LCD display module. Okay. So why 16 by 2? Anyone idea? What is mean by this 16 and what is mean by this 2? Sir, the So, registers. mm, wait, okay. You tell me if you were talking about something similar. So 16 is to 2. Suppose this is your screen, okay? This is screen of your LCD display. So it is divided like this, okay? Correct. Okay. So is 8 actually, it's 16, okay? 16 by 2 अब थोड़ा relate हो रहा है कि यहाँ से it's like 0 or 0 to 15, okay? 0 to 15 characters इधर आएंगे in two lines, first line and second line. 16 is to 2, okay? 16 by 2. 16 by 2 LCD module ऐसे होता है इधर you can fit 16 characters, okay? ऐसे up to 16 characters इधर आएंगे into two lines. That's why 16 by 2. So this is basically the LCD का module, okay? इसमें pins जो है ना वो इधर description दी है, इसमें pins भी 16 है, ठीक है? So first VSS, VEE and VCC. VSS, VEE and VCC, okay? So ये जो VSS है that is grounded, okay? Then we have VEE connected to constant 5 volt, okay? And then third one is contrast voltage. So contrast voltage go, they connect with this resistor. Okay, it is a pot actually, not a resistor. I'll show its actual connection. It's just for reference purpose. Okay. Then there is RS, RW, and enable. Okay, I'll explain you meaning RS, RW, and enable. Okay, and after that we have db0 to db7. Okay, means these are data bits. Okay, db0 to db7. Okay, these are 8 pins, and these are like ground and all optional pins that not every controller has, like black pane light controller and bpl option. So that also we uh, use a potentiometer here and control it when we actually do it on hardware. So okay, so this is basically the rough diagram. Okay, very bad representation of this diagram. So
VSS ground, VC, it is a 5 volt supply. There is contrast. जो backlit होता है ना इधर, उसका contrast कम ज़्यादा कर सकते हैं using this pot. Okay, this is VSS, VE and VCC. It's like that. Okay, CC contrast. Okay, then RS and RW and enable. What are these three pins? RS is register select. अभी ये जो एलसीडी मॉड्यूल है, इसमें भी दो रजिस्टर्स है, ठीक है, डेटा रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ओके, और इसका खुद का एक अलग से कमांड का सेट है, ठीक है, कि तुम्हें पूरा डिस्प्ले क्लियर करना है, उसके लिए अलग कमांड है. तुम्हें कर्सर फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे कर्सर लाना है, उसकी एक कमांड है. नीचे लाना है, उसकी एक कमांड है, ठीक है. So everything and anything that we do in this LCD module, it works with commands. Okay. So RS में क्या होता है, जब हम RS1 select करेंगे तो it will be in a data mode. Okay, data register, it will act as a. Okay, and then if I am selecting at a 0, then it is an instruction mode. मतलब मुझे अगर कंट्रोल करना है अपने एलसीडी को अकॉर्डिंग टू माय यूज. ओके, if I want to control my LCD module according to my use, if I want to modify it, if I want to initialize it. Okay, only controlling की situation में नहीं, जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे ये एलसीडी मॉड्यूल को, जब भी हम ऑन करेंगे तो पहले सेट ऑफ कमांड्स ही आएंगे, ठीक है. और हम क्या करेंगे पता है, वो कमांड हम सेंड, सब कमांड सेंड कर देंगे हम इन पिन, पिन इन पिन पे कमांड सेंड करेंगे, एंड देन we will select the I mean first we'll select this register select ka pin. Okay, we'll set it at 0, then we'll send some command over here, okay, on these pins. Then we'll again move to next pin. Okay, मैंने सिलेक्ट किया कि जो डेटा अभी पोर्ट पे गया है वो डेटा है, एक्चुअली जो डिस्प्ले करना है वो कमांड है, क्या है, ठीक है, वो हम इससे सिलेक्ट करेंगे बेसिकली टू बी टू explain you in simple terms. Then we have RW, read and write. So RW mostly we use in the write mode only. I mean हमें write ही करना है ना LCD से, right? We'll be writing to this LCD module, so it is always used in write mode, and most of the people directly ground it rather than connecting it to our controller. Okay, they directly ground कर देते हैं zero potential पे इसको, ठीक है. एंड रीड मोड कब यूज होता है फिर? सो रीड मोड यूज होता है हमारा जो ये एलसीडी मॉड्यूल है, ये अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है. सो ये जो हम तरीका सीख रहे हैं, इट इज अ नॉर्मल, ओके, 8 बिट ऑपरेशनल मोड है, मतलब आठों के आठों बिट्स हम यूज करेंगे. ओके, देन देयर इज 4 बिट मोड आल्सो. ओके, मतलब 8 डेटा पिन्स है तुम्हारे, ठीक है, 8 डेटा पिन्स है, उसमें से हम 4 ही यूज करेंगे, DB0 to DB3. ओके, दैट इज ऑल्सो वन मोड. सो इट इज कॉल्ड 4 मोड ऑपरेशनल मोड. सो ऐसे बहुत सारे मोड्स होते हैं. तो ये रीड मोड का वो यूज होता है जब हम प्रोग्राम, ये हम यूजिंग डिले कर रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है, हम कुछ तो डेटा भेजेंगे आउटपुट पोर्ट पे, एंड देन विल जनरेट अ डिले यूजिंग एनी मेथड वी नो सो फार. ओके, ये डिले मेथड है. देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड बिजी फ्लैग मेथड. ओके, बिजी फ्लैग. तो उसमें ये जो लास्ट DB7 वाला बिट होता है ना, इट एक्ट्स एज अ बिजी फ्लैग. मतलब जब तक ये कंट्रोल अपना बिजी है ना, इसका कुछ तो एक्शन करने में, तब तक ये इसका हम स्टेटस रीड करेंगे अकॉर्डिंगली, एंड दैट विल यूज इन आवर प्रोग्राम. सो इन दैट कंडीशन वी आर बेसिकली यूजिंग दिस रीड मोड. तब तक हमें नहीं लगता, तो सीधा ग्राउंड किया तो भी चलेगा, ठीक है. देन इनेबल. इनेबल पिन करती क्या है, तो इनेबल इज बेसिकली इट स्टार्ट्स टू लैच द डेटा टू एलसीडी कैरेक्टर्स. ओके, तुम्हें 0 to 1 हाई टू लो पल्स देनी पड़ती है, सॉरी 1 to 0 या 0 to 1. ओके, you have to give that pulse. Okay, you have to first set it. Okay, and then reset it. Okay, इनेबल पिन पे हमें ये या ये कोई तो एक ट्रांजैक्शन लगता है जिससे डेटा लैच होगा आउटपुट पोर्ट पे, ठीक है.
तो हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे, देन ये डेटा फाइनली आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, DB0 to DB7 आर डेटा बिट्स नॉर्मली, इससे डेटा ट्रेवल होगा जो भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल दिस इज ग्राउंड, नथिंग एल्स। ओके, सो पिन का फंक्शन एटलीस्ट समझ आ रहा है कि ये एलसीडी काम कैसे करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, मुझे पता है, लेकिन डू यू एटलीस्ट नाउ नो हाउ the pins are and what is the function, or is there any confusion in the pins? No, sir. Pins clear? Cool. Now I'll paste you, the description, I mean the commands and stuff like that. Okay, मैंने तुमसे बोला था कि this is an LCD module, okay? It has its own set of commands. अभी ये कमांड मतलब एग्जैक्टली क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कमांड मतलब करना क्या है मुझे, अगर मेरा ये एलसीडी मॉड्यूल है, ठीक है, जिसके DB0 to DB7 8 डेटा पिंस है, बराबर। सपोज ये 8 डेटा पिंस मैंने कंट्रोलर को कनेक्ट किया है। ठीक है, ये भी शांति से नहीं हो रहा है, एनीवेज। तो ये कंट्रोलर का मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर है, सॉरी फॉर द बैड माइक्रो कंट्रोलर, बट या सो ये पिंस एलसीडी के हमने कंट्रोलर को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये कमांड हम कैसे डालेंगे इस एलसीडी में, तो इसी पोर्ट पे हम कमांड्स भी भेजेंगे, जैसे कि 38H क्या करता है, यूज 2 लाइन एंड 5:7 मैट्रिक्स। ओके, सो दोनों भी लाइन यूज करने की कमांड है ये। ठीक है, वी आर इनिशियलाइजिंग द कंट्रोलर, वी आर इनिशियलाइजिंग द एलसीडी एंड वी आर टेलिंग दैट use both the lines and 5:7 मैट्रिक्स। अभी 5:7 मैट्रिक्स मतलब अगर तुमने नोटिस किया होगा एलसीडी डिस्प्ले पे ऐसे 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 इसमें फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। ठीक है, दैट इज 5:7, सो 5:7 मतलब 1 2 3 4 5 एंड 7 इज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, ऐसे डिस्प्ले होता है। सो बेसिकली इट इज टेलिंग कि ऐसे 5:7 का मैट्रिक्स यूज कर एंड वो दोनों लाइनें यूज कर। तो ये डेटा कैसे जाएगा, हाउ विल दिस इज अ कमांड नाउ। ओके, नाउ दिस इज अ कमांड, दिस इज नॉट अ डेटा, दिस इज कमांड। तो फ्लो क्या होता है, ठीक है, एलसीडी प्रोग्रामिंग का, फर्स्ट वी आर गोना इनिशियलाइज द एलसीडी, ओके, in whatever mode we want to use it. Okay, we are initializing the LCD. Next step, हमें initialize कर रहे हैं हम, initialize we are doing means what are we doing exactly, we are sending few commands to our LCD, right? So वो commands भी latch होने चाहिए port पे, right? To latch these commands properly, what are we gonna do, the flow is going to be, हमने पहले हमने देखा था, पिंस देखे थे, RS RWN इनेबल। ओके, RS RWN इनेबल। तो RS क्या था, रजिस्टर सिलेक्ट। तो हम जब कमांड भेज रहे थे तो रजिस्टर सिलेक्ट हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। ओके, अदरवाइज 0 करेंगे। डेटा रजिस्टर 0, कमांड रजिस्टर 1। ओके, मैं सही बोल रहा हूँ ना या मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ? So data register is 1 and instruction register is 0। ठीक है, इधर लिख के रखता हूँ, डेटा रजिस्टर इज 1, ओके, एंड कमांड अगर करना है तो 0 होगा अपना RS। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज आई हैव टू सिलेक्ट what I'm passing, am I passing command or am I passing data? So M38H is command, okay, it is not a data। So मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि कमांड रजिस्टर सिलेक्ट कर, मतलब RS
इज इक्वल टू 0। RS 0 करूंगा मैं। उसके बाद RW का स्टेटस रीड एंड राइट, हम राइट कर रहे हैं, तो राइट के लिए क्या था हमारे पास, राइट करना है हमें तो 0 सिलेक्ट करेंगे, रीड करना है तो ग्राउंड, और मोस्टली ये ग्राउंडेड रहता है। इसका मतलब ये 0 ही रहेगा, ऐसे ही ध्यान में रखो तुम लोग। RS RW एंड इनेबल। अभी डेटा लैच कैसे होगा, तो you know to start latching the data on our LCD का pin, it has to go from high to low. Okay, it first we have to send a high pulse and then we have to send a low pulse, like then E we have to do from make from high to low, ये करेंगे हम, ठीक है। the high to 1 high to low मतलब इसको हाई करेंगे, डीले देंगे, फिर लो करेंगे, ठीक है, फिर लो करेंगे, फिर डीले देंगे, ऐसे, ठीक है। जब ये हाई टू लो ट्रांजैक्शन ये होगा ना, डिटेक्ट होगा, उसके बाद ये डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा एलसीडी में, ठीक है, एंड विल ट्रीट इट एज अ कमांड। सो आफ्टर लाइक फॉर एवरी कमांड, for every transaction, for everything in LCD, we have to do this, okay। एक 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 हम कैरेक्टर जो भेजेंगे हर एक पोजीशन पे, उसके लिए हमें ये सब सिलेक्ट करना है, आर एस आर डब्ल्यू इनेबल, आर एस आर डब्ल्यू इनेबल, आर एस आर डब्ल्यू इनेबल, एवरी टाइम यू टू डू दिट। सो suppose you are done with your initialization, now you want to send some data to your LCD के आउटपुट पोर्ट। सो तुम्हें अगर कोई डेटा भेजना है आउटपुट पोर्ट पे, तो कैसे भेजोगे, सपोज तुम्हें लिखना है कंट्रोलर, तो फर्स्ट तुमने इनिशियलाइज किया, देन तुमने क्या किया, पोर्ट मतलब पहले तो मैं एक्यूमुलेटर में लूंगा मोस्टली, ओके। मैंने ये ऐसे कुछ तो करके ये सी को एक्यूमुलेटर में लिया, ठीक है। देन व्हाट आई विल डू इज, एक्यूमुलेटर का डेटा मुझे पोर्ट पे डालना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर का डेटा आई हैव टू सेंड इट ऑन पोर्ट, बट हाउ विल आई डू दैट, फर्स्ट मुझे ये रजिस्टर आर एस पिन में 0 है, क्योंकि मैंने कमांड का सिलेक्ट किया है, पहले I was initializing and it was, that's why it's 0. So now I'm sending data, actual data. So I'll make RS is equal to 1. भी 0 नहीं चाहिए मुझे, RS 1 चाहिए इस केस में, RW 0 चाहिए क्योंकि राइट मोड में यूज करना है, एंड इनेबल अगेन 1 to 0। उसके बाद हमारा जो डेटा है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है वो लैच हो जाएगी, जैसे ही मैं लिखूंगा मूव एक्यूमुलेटर का डेटा पोर्ट 1, तो आफ्टर डूइंग after setting these values, I will move accumulator का data on port 1 and then I'll do this transaction, okay, 1 to 0, and जैसे ही डिटेक्ट होगा वैसे ही वो डेटा आउटपुट चला जाएगा, ठीक है। सो तुम्हें इधर ही दो तीन चीजें दिमाग में आई होगी कि इनिशियलाइज एंड ये हम डेटा ही सेंड कर रहे हैं एक तरीके से आउटपुट पोर्ट पे, राइट, but we are calling different function on different times, if you noticed। सो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मैं मतलब मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। इनिशियलाइजेशन टाइम में मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा, कमांड का फंक्शन, जिधर मैं आर एस एज ए 0 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। whereas when I'm sending data, I can use another function called data maybe, and then in that function I'll have rs as 1, ठीक है। डीले का तो किसी भी मेथड से डीले लिख सकते हो तुम, ठीक है। सो ये क्लियर हो रहा है तुम्हें, ये कंफ्यूजन है। पिन ड्रॉप साइलेंस। is this getting clear or it's still foggy, confusing how it is? सर थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है ना, तो ये कोड दिखाऊं मैं, उससे क्लियर हो जाएगा आई गेस। ये जितना देखोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये कमांड्स है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। These commands we only use a few like 38,
then like basic 0 1 clear screen, return home. Okay, ये basic 0 F LCD on, cursor blinking on, ये basic command हम use करते हैं. ठीक है, so let me display you guys the code and we'll start relating to it then. Okay, तभी तुम्हें ऑपरेशन समझ में आएगा. So let me share my screen again, and this time I am sharing this notepad. This code is quite big, so not this. No, wait. So, okay, let me paste my code here, okay, for ease of understanding. Hmm. Can you see the code now? Yes, sir. Cool. So, इधर क्या किया है? Accumulator में 38H. 38H क्या है? मैंने बोला था तुम्हें 38H इज अ क्या है? कमांड है, राइट? तो 38 is a command to initialize the LCD module. Okay, LCD module को हम initialize कर रहे हैं into 16:2 वाला mode. Okay, then what we are doing, a call command. Okay, a call command. Now where is a call command? इधर है. कमांड इधर लिखा है फंक्शन, उसमें क्या लिखा है? मूव पोर्ट 0,1, सॉरी एक्यूमुलेटर. सो मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा पोर्ट 1 पे डाल. एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा है? 38H. ओके, 38H इज एन इनिशियलाइजेशन की कमांड. सो वी नो अभी P2.0 एंड P2.1 ये क्या चीज की है इन्होंने? तो P2.0 is it is done 0 here and P2.0 इधर भी 0 किया है. एक मिनट. P2.0 1 and 2 ये रहेगा RS RW and enable, right? So we need to figure out which is RS, which is RW and which is enable now. So P2 हमने क्या किया है? सेट करके क्लियर कर दिया है. मतलब this is definitely enable वाली पिन. P2.2 is enable. Then क्लियर P2 डॉट, अच्छा क्लियर किया है दोनों भी, 0 0 किया है. एंड यहाँ पे राइट में क्या किया है? P2 डॉट P2.0 उन्होंने सेट किया है. अगर P2.0 सेट किया है राइट मोड में, हमें 1 क्या चाहिए? वी नीड व्हाट टू बी 1 इन राइट मोड? वी नीड RS टू बी 1 इन राइट मोड. ठीक है, वी नीड RS टू बी 1 in right mode. So P2.0 is RS. Okay, P2.0 is RS. तो इसके मैं पहले कमेंट करके रख देता हूँ किधर है P2.0. RS, देन ये है RW. ओके, एंड ये है enable. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, ये मैंने क्या किया समझ में आया तुम्हें? मतलब तुम्हारे समझा, अभी समझा नहीं रहा था मैं तुम्हें, लेकिन did you guys understand what I was doing? Any idea? कुछ लगा, पता चला तुम्हें? No, sir. I knew that. So
देखो पोर्ट 2.0 जो है कंट्रोलर का, वो उधर कनेक्ट किया, इट मींस ओके। पोर्ट 2.1 इज RS का पिन को कनेक्ट किया, पोर्ट 2.1 इज RW एंड पोर्ट 2.2 इनेबल को कनेक्ट किया, ठीक है। मैं पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ so that I can use notepad at the same time and along with this uh, whiteboard so that I draw it and then you understand it better way. हाँ, तो ये मेरा कंट्रोलर है, ठीक है, एंड ये मेरा LCD मॉड्यूल है। इसमें 3 कंट्रोल पिन है, RS RW एंड इनेबल। इतना तक समझ में आ गया? यस सर। तो ये कंट्रोलर के पिन से कनेक्टेड है, राइट, टू कंट्रोल, राइट। तो मैंने ये 3 कौन सी पिन है वो थोड़ा कोड में देखकर डिकोड किया, क्योंकि तुम्हें बताना चाहिए ना अभी क्या है। तो मैंने ये अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ कोड मैंने ये डिटेक्ट किया कि ये कैसे कमांड के लिए ये कौन सी पिन हाई एंड लो कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट मैंने सोच के ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए लिख दिया इधर। सो पोर्ट 2.0 is RS, पोर्ट 2.1 is RW and पोर्ट 2.2 is enable 0 1 2, ठीक है। पोर्ट 2.0, पोर्ट 2.1, पोर्ट 2.2, 0 1 2, RS RW and enable, ठीक है। RS RW enable। अब आ गया समझ में? यस सर। तो हम क्लियर कर रहे हैं पोर्ट 2.0, मतलब हम RS को 0 सिग्नल दे रहे हैं। आ गया समझ में? एंड RS 0 है, इसका मतलब क्या है? इट इज इन डेटा मोड और कमांड मोड। डेटा मोड और कमांड मोड, RS 0 है तो कमांड मोड, 1 है तो डेटा मोड, ठीक है। सो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर पे 30H लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कमांड नाम का एक लूप कॉल किया है, ठीक है, फंक्शन। देन इस कमांड में क्या लिखा है, एक्यूमुलेटर पे जो भी पड़ा है वो पोर्ट 0 पे डाल। अभी पोर्ट 0 पे क्या है, ये तो पोर्ट 2 हो गया। पोर्ट 0 हमारे 8 जो पोर्ट 0 के पिंस है ना, P0.0 टू P0.7, ये 8 पिंस है ना, ये यहाँ के 8 पिंस को कनेक्टेड है, ठीक है। पोर्ट 0.0 टू पोर्ट 0.7 आ रहा है समझ में? इनके डीबी से, एलसीडी में डीबी पिंस होते हैं ना, DB0 टू DB7, क्लियर? पोर्ट 0 is connected to data pins of LCD, okay? And पोर्ट 2 is connected to control pins of LCD. इतने तक समझ में आ गया? यस सर। Cool. So मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक्यूमुलेटर पे मैंने कमांड डाली, LCD की कमांड है 38H, ओके। ये कमांड अगर मैंने कंट्रोलर को दी एज ए कमांड, तो कंट्रोलर क्या समझेगा कि मुझे 16:2 के मोड में ऑपरेट करना है, ठीक है, ये समझेगा। तो मुझे ये कमांड देनी है, तो मैं कैसे दूंगा वो बता रहा हूँ मैं। तो एक्यूमुलेटर पे मैंने 38 डाला। उसके बाद पोर्ट 0 पे 38H डाला। लेकिन ये है क्या वो भी पता होना चाहिए ना। तो पोर्ट 2.0 मतलब RS, ये क्या है, रजिस्टर सिलेक्ट पिन जब 1 होती है तब वो डेटा सिलेक्ट होता है, जब 0 होती है तब कमांड सिलेक्ट होती है, ठीक है। अब ये कमांड है तो मैं पोर्ट 2.0 मतलब RS को मैं 0 करूंगा। RW मतलब रीड और राइट, हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के लिए इसको 0 रखना है, रीड ऑपरेशन के लिए 1 करना है, ठीक है। एंड थर्ड कंट्रोल पिन इज इनेबल। इनेबल का हमें हाई टू लो ट्रांजैक्शन करना है, उसके बाद ही ये जो डेटा है ये इन पिन्स पे लैच होगा। आगे समझ में? सो मैं इनेबल पिन को क्या करूंगा, पोर्ट 2.2 को एक बार 1 करूंगा, फिर डीले कॉल करूंगा थोड़ा सा, एंड फिर से
पोर्ट 2.2 को मैं 0 करूंगा, उसके बाद मेरा ये लूप कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस इंस्ट्रक्शन विल गो इनटू कंट्रोलर एंड इट विल इनिशियलाइज इट। आ गया समझ में? यस सर। तो लेट्स हैव अ लुक एट कोड नाउ। कोड में क्या हो रहा है? सेम ही हो रहा है। देखो, कमांड का लूप कॉल किया है मैंने, कमांड है क्योंकि 38H। देन क्लियर पोर्ट 2.0 मतलब RS क्लियर किया मैंने, मतलब आई हैव सिलेक्टेड कमांड रजिस्टर, ठीक है। देन RW क्लियर किया मैंने, ठीक है, क्लियर RW। RW तो रीड राइट, राइट ऑपरेशन है तो क्लियर ही करेंगे, मतलब 0 है RW। इनेबल EN मतलब पोर्ट 2.2 सेट बिट, ओके, सेट बिट इज अ कमांड, ठीक है। सेट बिट पोर्ट 2.2 मतलब इनेबल को हमने हाई किया, ठीक है, देन डिले कॉल किया, देन फिर से पोर्ट 2.2 को क्लियर किया, ठीक है, मतलब हाई टू लो हो गया। देन रिटर्न बोल रहा है ये। रिटर्न कहाँ जाएगा? जिधर से कॉल आया था, इधर से आया था। देन इधर आया, यहाँ पे आके अगेन एक और डीले, हमें ये डीले देना पड़ता है, ठीक है। जिस स्पीड से हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम करता है और जिस स्पीड से एलसीडी काम करता है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सो इफ यू विदाउट इंट्रोड्यूसिंग डिले, इफ यू कीप ऑन गिविंग कमांड्स ना, एलसीडी वोंट बी एबल टू प्रोसेस इट, ओके। यू हैव टू गिव इट सम डिले टू प्रोसेस। डिले किधर लिखा है मैंने? डिले यहाँ पर लिखा है। डिले अपना हमेशा वाला रजिस्टर में काउंट हम मूव कर रहे हैं और वो एक एक एक, एक डिक्रीमेंट करके फिर रिटर्न जा रहे हैं। रिटर्न किधर आएगा? इधर आएगा। इधर क्या है? 0EH। अभी नेक्स्ट कमांड दी है 0EH। क्या व्हाट इज मीन बाय 0EH? लेट्स फिगर दैट आउट। 0E इज कर्सर ब्लिंकिंग ऑफ, डिस्प्ले ऑन, ओके। कर्सर ब्लिंकिंग बंद की यानी डिस्प्ले ऑन केला, ठीक है। कर्सर ब्लिंकिंग मैंने बंद किया एंड डिस्प्ले ऑन किया है इस कमांड से। कर्सर ब्लिंकिंग ऑफ, डिस्प्ले ऑन, ठीक है, ये कमांड है। इसके बाद फिर से कमांड कॉल हो गया, ठीक है। फिर से डील है। कमांड में फिर से क्या होगा? एनी आइडिया ना? कैन यू टेल मी कमांड में क्या होगा अभी? कमांड लूप में क्या लिखा रहेगा इसके बाद? सर सेम ही होगा ना। हाँ सेम ही है, लेकिन वो सेम क्या है बताओ ना कोई। पोर्ट 2.0, पोर्ट 2.1 एंड पोर्ट 2.2। पोर्ट 2.0 is RS, पोर्ट 2.W RW, okay, and sorry, पोर्ट 2.1 is RW and पोर्ट 2.2 is enable। So कमांड में क्या लिखा है? वी आर मूविंग फर्स्ट एक्यूमुलेट का डेटा टू और डेटा बिट्स, ठीक है, पोर्ट 0 पे। देन RS को क्लियर किया मैंने, मतलब आई एम सिलेक्टिंग इट एज ए कमांड रजिस्टर। देन आई एम क्लियरिंग RW, मतलब राइट मोड में यूज हो रहा है ये एलसीडी। देन इनेबल को हम हाई करके लो कर रहे हैं, ठीक है, डीले के साथ। सो ये हो गया। तो ऐसे ही हमने सारी कमांडें दे दी, ठीक है, ये सारे कमांड्स वैसे ही दे दिए हमने, ठीक है। कमांड्स का जो भी मतलब है हो गया एग्जीक्यूट। उसके बाद मैंने एक्चुअली डेटा मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। डेटा क्या है? सी गया पहले, सी डिस्प्ले होना चाहिए, डिस्प्ले में मैंने सी भेज दिया, ठीक है। उसके लिए क्या लिखा है? ए कॉल डेटा राइट। डेटा राइट में थोड़ा अलग, एक ही चीज अलग होगी। पहले ऊपर हमने क्लियर किया था पोर्ट 2.0, इधर हमने सेट किया है। क्यों सेट किया है? क्योंकि दिस इज अ रजिस्टर सिलेक्ट पिन, ओके। रजिस्टर सिलेक्ट पिन हम हमारी जब 1 होती है तब हम ये बता दें कि अभी डेटा आ रहा है, ठीक है। पहले 0 थी, हमने क्या बोला था? कमांड आ रही है। 1 है, इसका मतलब डेटा आ रहा है, ठीक है। क्लियर पोर्ट 2.1 मतलब रीड राइट में से वी हैव सिलेक्टेड राइट ऑपरेशन, वी हैव क्लियर्ड पोर्ट 2.1। उसके बाद इनेबल पिन, इनेबल वी आर सेटिंग एंड अगेन क्लियरिंग, ओके।
मतलब हाई टू लो पल्स। समझ में आ रहा है ये? यस सर। कूल, इजी राइट? अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लेता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजी राइट, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अचीव। सो सो पहले पोर्ट 2.0 मतलब RS, रजिस्टर सिलेक्ट बिट मैंने सेट किया मतलब 1 किया है। 1 क्यों किया? बिकॉज इट इज अ डेटा। मैंने अब एलसीडी को बताया कि अभी डेटा आ रहा है, ठीक है, दिस इज अ डेटा, वॉट एवर इज ऑन पोर्ट 0 इज डेटा नाउ। यहाँ पे क्या बोला हमने? वॉट एवर इज ऑन पोर्ट 0 इज कमांड, ठीक है, इसलिए इधर क्लियर किया था, इधर सेट किया था। उसके बाद का तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद ये फिर से रिटर्न, रिटर्न किधर जाएगा? यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे फिर से डीले कॉल होगा, थोड़ी देर के लिए डीले होगा। उसके बाद ओ भेजा मैंने एक्यूमुलेटर में। फिर मैंने डेटा राइट का रूटीन कॉल किया। डेटा राइट में क्या लिखा है मैंने? एक्यूमुलेटर का डेटा पोर्ट 0 पे भेज दे। पोर्ट 0 पे क्या पड़ा है? एक्यूमुलेटर का डेटा चला गया, ओ चला गया। अभी वो ओ है क्या? वो ओ डेटा है, कमांड नहीं है, ये इधर बताया। उसके बाद मैंने राइट करना है, ये भी बताया एलसीडी को। उसके बाद मैंने बोला हाँ अच्छा जो भी है अभी वो लैच कर तेरे पिंस पे, तो सेट किया और क्लियर किया डीले के साथ। उसके बाद रिटर्न गया। रिटर्न कहाँ पर आ गया? मैं डेटा राइट इधर आ गया। उसके बाद फिर से डीले कॉल किया मैंने, फिर नेक्स्ट, एंड ऐसे ही मैं डिस्प्ले करूंगा वन बाय वन लेटर। अंडरस्टूड? सर यस। सर जो एक्यूमुलेटर है वो तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज होता है ना? तो ये जो हम भेज रहे डेटा, ठीक है, ये हम सी अरिथमेटिक फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। इट इज, सी इट इज अ मल्टीपर्पज रजिस्टर, वी मोस्टली यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, नॉट ऑलवेज। मतलब ये इजीली एक्सेसिबल है। मूव ए इज अ वेरी कॉमन यूज इंस्ट्रक्शन, ओके। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें अरिथमेटिक के लिए ही यूज करना है उसको। अभी जैसे कि बी भी है, बी रजिस्टर भी है, लेकिन बी मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन में बार बार यूज होता है। तो इट्स नॉट a hard and fast rule, all the registers can store all the things, okay. Any other doubt you have so far? So यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अभी इधर हमने वो जो कोड है, I have put it out here in our IDE, ठीक है। Are you familiar with this IDE, right? You following it, right? I have a simulation ready, but there is something wrong with that. Okay, I'll show you that also. अपने लास्ट लेक्चर का जो सिमुलेशन डायग्राम है ना, वही मैंने उसी में को बस एलसीडी कनेक्ट किया है, बट आई नीड टू फाइन ट्यून दैट एंड modify a few things here and there, and then only that will be see। इसके बाद डेटा का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है इधर। 52 पोर्ट 0 पे 52 पे स्टॉप हुआ है कोड। अब सारे कमांड्स तो गए हैं बराबर। सो अभी तुम्हें दिख क्या रहा है स्क्रीन पे? सर एप्लीकेशन ही दिख रहा है। मतलब नोटपैड वगैरह नहीं, अपना ये आईडी दिख रहा है ना बराबर? हाँ सर। ओके, थैंक्स, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन।
सो ये प्रैक्टिस भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक बार, लेकिन ये काम तो नहीं कर रहा है. I'll figure it out and tomorrow I'll show you the data displayed on this. See, something is happening but it's stopping, it's not working. So ये जो पिंस है सी बी एस एस बी डी वी, ये नाम थोड़े बहुत चेंज होंगे, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. अभी जो वीसीसी था, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल, उसको उधर वी, यहाँ पे वीईई बोला गया है, ठीक है. शिट मैन, यहाँ वी बोला गया है. तो जो मैंने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करूंगा बोला ना मैं, पॉट, तो इधर कनेक्ट किया है पॉट 1K का for contrast control, and this is rest of the things like VSS and VDD, then RSRW label, and then D0 to D7. Simple connections are there. It works absolutely, fine. But right now it is not working. I don't know why. I can show you when I had, done it in my college time. I still have that data, by the way. So this must not be simulation data though. It is actual हार्डवेयर एग्जीक्यूशन हो गए. See, ये मेरे इंजीनियरिंग के टाइम के स्क्रीनशॉट्स है जो तुम देख रहे हो अभी. So similar code we have to do, okay? We have to simulate it. We have to put it on hardware. और जो हमारे कोड में है, वो we used to display it like this. So मैं ये, हम वर्चुअली तो हम सिमुलेशन ही कर सकते, तो I'm doing it. So once I'm ready with the simulation, I'll show you. By tonight I'll get it ready, and tomorrow when we meet, we shall have the results with us. Tomorrow you'll be able to see it anyways. So far, any doubt, questions, concerns relating to LCD wala area? Sir, this might take some time. We'll just see this lecture again and let you know if I have any doubt. Yeah. Sure, no problem. I just captured your attendance, overwhelming response and attendance. So if you guys have no doubt,